Assalamu alaikum, Alaf. This is another session related to the curriculum. Previously, we discussed about the integrated curriculum. What is integrated curriculum? We also discussed what are the various steps to develop an integrated curriculum. We discussed about the horizontal approach as well as the vertical approach. Today, in this session, we will talk about the various strategies and approaches to the curriculum development. As we know that the medical field is evolving day by day, न्यू टेक्निक्स आते हैं, न्यू पैथोलॉजीज जो हैं ये डिस्कवर होते हैं, न्यू पैथोजन जो हैं आते हैं, न्यू इन्वेस्टिगेशंस जो हैं बेहतर से बेहतर रिलायबल एंड वैलिड इन्वेस्टिगेशन जो है ये आ जाते हैं. तो इसलिए there is a need in the, we can say, the update and that change in the curriculum. तो इसलिए जब ये कुरिकुलम प्री एग्जिस्टिंग है, सो कुरिकुलम डेवलपमेंट का मतलब हम ये नहीं ले रहे हैं कि एक न्यू कुरिकुलम किस तरह जो है बनाएंगे, बल्कि ये भी हो सकता है कि प्री एग्जिस्टिंग कुरिकुलम जो है उसको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन किस तरह जो है हम डेवलप करेंगे, इसको किस तरह अपडेट करेंगे, उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन लेके आएंगे, क्या क्या चेंजेस जो हैं. तो ये डिपेंड करता है ऑन द सिचुएशन. और ये जो ब्रिंगिंग चेंजेस है, या हम एक न्यू कुरिकुलम बना रहे हैं किसी भी डिसिप्लिन के लिए, और या जो है हम प्री एग्जिस्टिंग कुरिकुलम में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, तो इसकी मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज है, मुख्तलिफ अप्रोचेज है. तो उस अप्रोचेस पर आज डिस्कशन हमारी होगी कि कौन कौन सी अप्रोचेज है, उसकी कुछ ब्रीफली अच्छा है, बुरा है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे. So the objectives of today's lectures, they are the what are the different approaches to curriculum development, and then the second we will talk about who will be the involved, who will be the stakeholder, yeah, who will be the staff members, who will be the members who will decide for that changes for that curriculum development. तो इन दोनों के लिए मुख्तलिफ अप्रोचेज है. ब्रीफली जो हम एक एक अप्रोचेस पर बात करेंगे. Mostly this lecture has been based on the research article and the work by the R.M. Harden with the name Approaches to the Curricular Planning. What will be the benefit of this? All the healthcare providers who are the audience, they will just studying by studying these approaches, they will be able to get an insight into the curriculum development process, and then they can have the practice of that curriculum uh, development in their own department in colleges. So they will be just have an insight of the various approaches, what are the different approaches, and which one is the best one, which one is the bad one. So we will briefly talk about those various approaches. So the main thing is that, first of all, to what extent the teachers they want to wish to focus on. If they are going to focus on the aims and objectives, that will be an engineering approach. But if the focus and emphasis is on the teaching methods, about the strategies of that during the lecture, so they will within the, we call that as mechanical approach, yeah, mechanic approach. If the main focus is on the content of the curriculum, what will be the content of that curriculum? So that will be, we can call as the cookbook approach. If the main focus is on the timetable, if the main emphasis and concentration is on the timetable, how many classes, what will be uh, per hour, what will be the maximum hour, and what will be the minimum hour for a topic for a module. So if that is the main focus is on the timetable, so that will be a railway approach. If the main focus is on the problem which will be faced, which need to be solved, so that will be called as the detective approach. As initially there will be a strategy to detect and to identify the problems, and then there will be the solution, so that we call as the detective approach. If the curriculum main development, main focus and concentration is in a specific ideology and a specific idea, a specific concept that we call as the religious approach, and if uh,
the main focus and the main concentration is on the terms, regulations for both the students and teachers and all, then there will be called as the bureaucratic approach. And if the main focus is to how to make it attractive for those who are going to sponsor this curriculum, this institute or this program or this discipline, so there will be, we can call is the public relation approach. The one thing and which we will discuss in the end, and that is one of those which is not a recommended approach, that is the magician approach. In that approach, it is not clear that how a curriculum will develop. So that's why there is no such way from here it comes, how it will be. So there is a not recommended approach we call as a magician approach. So before going to that engineering approach, we will just a small discussion on the another which we discussed the who decide. That simple mean if who will be the representatives, who will be the those members who will bring that change in the curriculum. Um, if there is a representative group, if there is a member from each department, if usually the head of department, so there is a representation from every department. So that approach, which will be used for the taking the decision, which will be used for the identifying the changes and that need to be updation, that will be called as the United Nations approach. And if everyone is which is concerned with that curriculum is involved in that curriculum development process, then it will be known as the People Congress approach. But if the decision is taken by a single person and all the changes and all the that modification that is being supervised by and bring by a single person, that is actually known as the chair approach, or we can call it the dictator approach. If there is a collaboration with students, patients, as well as some other professional colleagues, so that will be called as the consumer approach, as well as they can be called as the customer approach. And if the decision making, if for their curriculum development, they may involve some external consultant, some expert which are the have the expertise of medical education, they may have the expertise of the curriculum development, they may have the expertise of the medicine, pathological sciences, the basic sciences. So in maybe they may be from other institution, they may be from the other field, but there may be external, so there will be called is the consultant approach. So these are the various approaches which we introduce and we discuss for these both steps, that how to develop a curriculum, how to update a curriculum, how to we can say that manufacture a curriculum. Yeah, we can redesign a pre-existing curriculum, and who will be involved in the bringing those changes and bringing those modification in the curriculum. So first of all, this is the engineering approach. As we discussed in the start, that if the focus is on the competencies, if the focus is on the aims and objectives, the complete curriculum is made just on the best of the aims and objectives of that discipline. So then there will be the engineering approach. मिसाल के तौर पर जिस तरह की एक इंजीनियर होते हैं ना, वो कहते हैं कि आप जो है चाहते किस तरह का घर चाहते हैं, बजट आपका क्या है, आप आपकी मतलब जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या, और इन सब जानने के बाद जो है वो फिर मैप बना लेता है, वो फिर डिजाइन बना लेता है. मतलब contents, strategies, all these they are the secondary things, and the primary thing is just the objectives. तो सबसे पहले जो है aims and objectives बनाए जाते हैं, और aims and objective के बेस पर फिर पूरा curriculum जो है डिजाइन किया जाता है. So somehow this is a very good approach as well, as if we have the focus on aims and objectives, so that aspects will be added to the curriculum which have some need, which are important. And
another advantage is that the trivial aspects that will be excluded from during the this approach will be it is used for the curriculum development. So just like the engineer, they just demand from the owner what you want, what are your budget, what are your aims and objective, और फिर उसी के बेस पर जो है उसकी डिजाइनिंग कर लेते हैं. So that is why this approach is known as the engineering approach. The second one, this is known as the mechanic approach, and this is different from the previous engineering approach. As in this approach, the main focus, the main emphasis, concentration is not on the aim and objective, not on the content, but that is on the teaching methods, the strategies and techniques, how the curriculum will be delivered to the students. So if it depend on the situation, it depend on the resources which they have. So this actually is an approach in which the members who are going to develop this curriculum, they have an emphasis on what will be, if there are any resources available for the e-learning, if we design the problem-based learning, what if there is hands-on practice, what if we design this curriculum for that lectures. तो या स्मॉल ग्रुप्स हैव भी दोज रिसोर्सेज. तो अगर ये अप्रोच जो है बनाया जाता है कि इस टॉपिक को स्मॉल ग्रुप में डिस्कस किया जाएगा, इसको ई लर्निंग होगी, या तो फिर क्या होता है, इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो भी जो है वो शामिल होंगी, वो भी उसके लिए जो है फिर अरेंज होंगी. तो या तो पहले से अगर उन्होंने एक प्रीरिक्विजिट रिक्वायरमेंट दी है कि वी हैव दीज रिसोर्सेज, और उस रिसोर्सेज के बेस पर जो है फिर ओटीटी स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स बनाते हो, उसी के बेस पर फिर पूरा कुरिकुलम बेस होता है. तो दिस इज देन नोन एज द mechanics approach. So we can simply say that in this mechanic approach, the main emphasis that this is just on those techniques which will be used to deliver that lecture. Now, why it is known as the mechanics approach? तो जिस तरह एक कार मैकेनिक होता है ना, उसका मेन कंसर्न जो होता है वो जब टाइप ऑफ द इंजन विच इज बीइंग यूज्ड इन द कार उसके साथ होता है, द नंबर ऑफ सिलेंडर के साथ होता है, या दैट ब्रेक स्पोर जो है उसके साथ होता है, रेदर देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस कार एंड इन विच डायरेक्शन इट विल ट्रेवल एंड टू व्हाट डिस्टेंस इट हैव टू बी ट्रेवल, वेयर इट हैव टू बी ट्रेवल. सो ये जो इसी तरह इस कुरिकुलम में भी ये नहीं देखा जाता कि what will be the aim and objective, but how they will be delivered. So though that has some advantages, but mostly जो है that has disadvantages. और उसकी वजह ये है कि if we don't have the objectives, if you don't have that aims in the start, so फिर क्या वो टीचर को जो है वो एक पाथवे, एक डायरेक्शन नहीं होगा कि हमने कहाँ जाना है. और ये एक जो प्रीवियस अप्रोच जो हमने डिस्कस किया है विच वाज द इंजीनियरिंग अप्रोच, जिसमें मेन फोकस जो है वो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पे था. तो वहाँ का एक एडवांटेज तो है विच इज डिसएडवांटेज फॉर द मैकेनिक्स, लेकिन यहाँ पर इंजीनियरिंग अप्रोच में भी ये एक डिसएडवांटेज है. इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, और फिर हर साल जो है, चूंकि हमने स्टार्ट में कहा कि इवोल्यूशन होती है, न्यू न्यू टेक्निक्स आते हैं, न्यू डिजीजेस जो है सामने आती है, न्यू ट्रीटमेंट्स एंड इन्वेस्टिगेशन उसमें डेवलपमेंट होती हैं, न्यू ट्रीटमेंट अप्रोचेस अल्टरनेटिव्स आते हैं. सो दैट्स वाई हर साल जो है फिर इन ऑब्जेक्टिव्स को अपडेट करना होता है, and that is a quite time consuming. So this is one disadvantage. Otherwise जैसे हम इस इंजीनियरिंग अप्रोच को देखें तो इट लुक लॉजिकल, और ये सबसे जो है बेहतरीन है, मोस्टली जो है ये यूज होता है. बट देयर शुड बी इन अ टीम, देयर शुड बी अप्रोच फॉर दैट, हाउ द ऑब्जेक्टिव्स विल बी updated on annual basis. The next thing, the next approach is the cookbook approach. That is
वाई इट इज नोन एज द कुक बुक अप्रोच। जिस तरह एक कुक बुक होता है जिसमें मुख्तलिफ रेसिपीज होते हैं, मुख्तलिफ उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और फिर इन इंग्रेडिएंट्स से जो है वो क्या बनाते हैं, मुख्तलिफ डिशेस बनाते हैं। तो इसी तरह जो है इस अप्रोच में मेन जो डेवलपर्स का जो मेन एम्फेसिस होता है, दैट इज ऑल ऑन द कंटेंट, एंड दे डोंट हैव the emphasis on the Amazon objective, they don't have the focus and emphasis on the okay. सो मैन उनका जो इसका अप्रोच कि व्हाट विल द टीचिंग स्ट्रेटजीज जो है उस पे ज्यादा उनका फोकस नहीं होता। सो मैन जो इनका एम्फेसिस होता है, दिस इज ऑन द कंटेंट, and there is too much attention is paid to individual dishes but too little to the overall menu and how dishes are presented. That's why it is known as the cookbook। कि जिस तरह इसमें सपोज एक स्पेसिफिक टॉपिक जो है, एक स्पेसिफिक मॉड्यूल को जो है उसको ज्यादा तवज्जो दी जाती है उसको, और फिर कुछ ऐसे होते हैं दे आर नेग्लेक्टेड, कुछ इस तरह उसको। तो ये जो है एक डिसएडवांटेज जो थोड़ा सा आता है इन द नॉन रिकमेंडिंग लिस्ट वाली अप्रोचेस में आती हैं, कि उसमें ये होता है कि chunky we don't have the aims and objectives, so that's why we don't there is ununiformity, this imbalance between the focus given on the different contents। बल्कि कुछ में होता है कि जैसा इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, इंग्रेडिएंट्स से जो है कुछ चीजें जो है बन जाती हैं एक डिश, और कुछ डिश ऐसी होती हैं कि जिसमें से वो ये डिपेंड करते हैं ऑन द टीचर पे कि वो इससे क्या डिश बना लेता है। सो ये होता है कि इसमें से कंटेंट्स तो दी जाती हैं बट डायरेक्शन नहीं होता, इसमें से जो है वो टीचिंग स्ट्रेटजीज नहीं होता। तो फिर वेरिएशन आती है ना कि कुछ टीचर्स जो है उस कंटेंट को एक अंदाज से दूसरा जो है दूसरी स्ट्रेटजी से वो डिलीवर करता है, और उसका स्टार्ट पे कोई ऑब्जेक्टिव भी नहीं होता। तो ये होता है कि वहां पर प्रॉब्लम आ जाए। दैट इज वन ऑफ द रीजन कि दिस कुक बुक अप्रोच जो है that has some disadvantage, because of that this is not a recommended one। The next approach is the railway approach। just like in railway there are different routes, and वहाँ पे एक टाइम टेबल होता है कि किस टाइम जो है कौन सी रेलवे आएगी और किस रूट पर आएगी। तो इसी तरह जो है if in the development of curriculum is if the main focus is on कि ड्यूरिंग दैट ईयर ऑफ एजुकेशन कौन सी फेज में कौन सा सब्जेक्ट कौन सा जो है ये पढ़ाया जाएगा, और कितनी जो है उसमें मेन एम्फेसिस ऑन दैट कि टाइम कितना होगा उसका, कितने वीक्स में वो पढ़ाया जाएगा। तो ये नहीं देखते कि भाई कंटेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, बट दे आर जस्ट गोइंग टू finish that subject and placing the subjects at different phases of that curriculum। So there is एक एडवांटेज इसका ये है कि इसका जो स्केड्यूल होता है ये बहुत क्लियर होता है, एंड दैट्स व्हाई इट्स रेडी टू इम्प्लीमेंट डायरेक्टली। क्योंकि एक डॉक्यूमेंट सपोज बनाया जाता है और डॉक्यूमेंट में स्केड्यूल लिया जाता है कि दिस सब्जेक्ट्स हैव टू बी taught in that phase and there will be ended at that phase, that will be start of the another यहाँ पे। तो उस डॉक्यूमेंट को उसमें सब कुछ डिटेल होता है इसके बारे में, फिर वो दैट स्केड्यूल इज देन सेंट टू द स्टूडेंट एज वेल एज टू द टीचर एज वेल, और फिर स्टूडेंट और टीचर दोनों यूनिफॉर्मली जो है अकॉर्डिंग टू दैट स्केड्यूल जो है द एक्ट अपॉन on those documents। so इसकी जो implementation है that is very easy and as well as immediate, but it's lacking the other aspects of the curriculum which are very important। The next approach is the detective approach, and in this approach, the main thing is to search for the problems, identification of the problem, that where the problem is in the curriculum. Usually, this approach is used for the um, modification in the pre-existing approach, because if there is an approach, obviously there will be some manholes and there will be black holes in that curriculum. There will be problems, and might be those problems that have been identified, or a team has been recruited just to find where the problem is। एंड देन ये प्रॉब्लम सिर्फ आइडेंटिफाई करना नहीं है बल्कि इसको जो है फिर सोल्यूशन भी देना है। तो इससे क्या होगा, कुरिकुलम जो है
redesign होगा. So that development in the curriculum, in which the main thing is to find out those black holes, और फिर इसको जो है फिल करना है, उसको फिर जो है ओवरकम करना है. So that approach is actually known as the detective approaches. अब इसमें ऐसे होता है कि अब ये जो डिटेक्टिव अप्रोच है, ये बहुत सारे जो फैकल्टीज हैं या वहाँ पर जो टीचर्स या स्टाफ है उनको भी एंगेज कर सकते हैं. और उसको इसलिए एंगेज करना ज़रूरी भी है कि उनको ज़्यादा पता होता है कि कौन से प्रॉब्लम्स जो है हम डील कर रहे हैं. तो जब उनकी प्रॉब्लम्स सुन उनसे आप जो डेवलपर्स है, जो करिकुलम डेवलपमेंट करते हैं, जो इन्वॉल्व होते हैं, जो एक्चुअली यहाँ पे वो डिटेक्टिव्स हैं, अगर जब उनसे सेशन लेते हैं, उनके साथ इंटरव्यू लेते हैं और उनकी उनकी प्रॉब्लम जो है सुनते हैं, तो इनको एक मोटिवेशन भी मिलती है कि उनकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएंगी. तो ये मैं भी जो है इट इज़ अ वेरी बेनिफिशियल. लेकिन चूंकि ये डेवलपर जो है ये बहुत सारी और मसले और इस तरह प्रॉब्लम्स जो है आइडेंटिफाई करेगी, जो हिडन्स होते हैं और जो कुछ स्टाफ मेंबर्स नहीं चाहेंगे कि वो आइडेंटिफाई हो जाए, बिकॉज माइट बी द प्रॉब्लम के काज जो है वो होते हैं. सो यहाँ पे एक ये है कि और इसी वजह से तो इसको डिटेक्टिव अप्रोच कहा जाता है कि इसमें वो उनको इंगेज भी रखा चाहता है, लेकिन उसमें जो कुछ हिडन प्रोसीजर, हिडन प्रॉब्लम जो वो भी आइडेंटिफाई की जाती हैं. और इसी वजह से जो है इट मे हैव एन थ्रेटनिंग इफेक्ट. इट इज इंटिमिडेटिंग फॉर द टीचर्स. एक डर सा पैदा हो जाता है ना उनके लिए, एक अनसर्टेनिटी उनके लिए आ जाती है कि हमारे जो शॉर्ट कमिंग्स है ये आइडेंटिफाई हो जाएंगी, हमारे जो प्रॉब्लम्स विच आर रिलेवेंट एंड बिकॉज ऑफ अस वो आइडेंटिफाई हो जाएंगी. तो इन सब के बाद जो है अगर प्रॉब्लम जो है आइडेंटिफाइड हो भी जाते हैं, लेकिन इसी डर से कि शॉर्ट कमिंग्स और प्रॉब्लम्स स्टाफ मेंबर्स और किसी भी एक इंडिविजुअल के सामने आ जाएंगी, तो माइट भी वही बंदे जो हैं अपोजिशन में चले जाते हैं. और वो फिर इसी जो डेवलपर्स जो है वो जो मॉडिफिकेशन लेके आएंगी, सोल्यूशन लेके आएंगी, जो चेंज लेके आएंगी, उसी की इम्प्लीमेंटेशन में एक रुकावट और ऑब्स्टिकल वही लोग बन जाते हैं जिनकी वजह से है ये प्रॉब्लम्स थी. तो यही वजह होता है कि इट में टाइम कंज्यूमिंग, ये बहुत टाइम ले सकते हैं. और फिर अगर ये तो इसमें सोल्यूशन की भी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो प्रॉब्लम फिर इसके डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं, उसको स्टडी किया जाता है, फिर उसके लिए सोल्यूशन, और फिर जो है उसके लिए एक नई कुरिकुलम डिजाइन किया जाता है. तो ऑलमोस्ट इफ मैं टेक 1 ईयर, तो इस 1 साल में कुछ नई प्रॉब्लम जो है ये फिर से अराइज होंगे. तो ये जो है हमेशा सर इस तरह एक वापस ही जाएंगे उसकी तरफ, प्रॉब्लम्स की तरफ. कभी भी जो है ये इस तरह एक फ्यूचर नहीं होगी भाई नाउ इट इज कंप्लीटेड. तो इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि एक तो टीचर्स और वहाँ पे जो इन्वॉल्व मेंबर्स हैं इस प्रॉब्लम की, उनकी भी ये पोजीशन सामने आ जाती है. एंड सेकेंडली द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम्स may be टाइम कंज्यूमिंग, और उस सॉल्यूशन को डिजाइन करने में और प्रॉब्लम आती हैं. और इस तरह ये जो है कभी भी जो है इस तरह नहीं होगा कि भाई curriculum will be problem free. So there may be a continuous process. So that one of the disadvantage this approach have. The next approach is the religious approach. Why it is known as the religious approach? जिस तरह हम देखें ना religion में we have एक faith होता है, एक अकीदा होता है, और उस पर हम ना हम क्वेश्चन करते हैं ना हम उस पर कोई डिस्कशन करते हैं, बस हर एक को कबूल होता है. और जो भी है मतलब वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन विद दैट. इसी तरह जो है इस अप्रोच में भी एक स्पेसिफिक मैन जो इनका फोकस होता है वो एक स्पेसिफिक आइडिया पर होता है, और एक काज होता है, एक बिलीफ होता है, और उस प्रिंसिपल्स पर वो जो है वो चेंजेस लेके आते हैं. अब ये जो है इस पर किसी को ओपन डिस्कशन नहीं देती कि भाई हमने क्या करना है, क्या करना नहीं चाहिए.
बस एवरी पर्सन दैट उसका emphasis उस एक स्पेसिफिक काज, एक स्पेसिफिक बिलीफ और एक उस कंसेप्ट पर आती हैं। तो दैट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ दिस अप्रोच एंड रिलीजियस अप्रोच, कि वहां पे जो है डिस्कशन, ओपन डिस्कशन नहीं होती, एक ओपन प्लेटफॉर्म नहीं होता, बट कि सिंपली दे हैव टू फोकस ऑन अ सिंगल, और उस सिंगल को अच्छा है या बुरा है, बट दे हैव टू फोकस ऑन दैट। पैरेलल जो है साइड वाइज दूसरी चीजों को जो है वो नहीं देखते हो, और नहीं यहाँ पे उसका एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ नहीं होता जिसपे रोड कोई डिस्कशन वगैरह करे। लेकिन ये होता है, और एक बार जब ये एक्सेप्ट होता है तो एवरीबॉडी हैव टू फॉलो दैट, इवन इफ इट इज गुड और बैड, देयर इज नो room and when for those objections. So again, this is in those which have some serious disadvantages in this approach. The next approach is the bureaucratic approach, in which the man focuses on the terms and regulation and rules, जहाँ पे जो है पॉलिसीज बनाई जाती हैं। these policies might be student attendance के बेस रिलेटेड हो सकती हैं, ये एग्जामिनेशन रिलेटेड होती हैं, टीचर्स रिलेटेड होती हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर्स एंड स्टूडेंट, स्टूडेंट यूनिफॉर्म रिलेटेड होती है, क्लास जो उसकी स्टडी जी है उनकी रिलेटेड कोई पॉलिसीज हो जाती हैं। तो इसका मेन फोकस जो होता है कि ये नहीं कि भाई पढ़ाया किस तरह जाता है, वो क्या पढ़ाया जा रहा है, बस वो जो है उस पॉलिसीज की तरफ कुछ यूजुअली जो है कुछ इंस्टीट्यूट ये डिजाइन जो है ये करते हैं कि दे मेनली फोकस ऑन द पॉलिसीज, दे मेनली फोकस ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन। ये नहीं देखते कि टीचर जो है वो क्या पढ़ा रहा है, किस तरह पढ़ा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, बट द मेन थिंग इज दैट कि वो टर्म्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करे और वही पॉलिसीज के मुताबिक वो चलता रहे। तो दिस एक्चुअली नोन एज द ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, क्योंकि इसमें पॉलिसीज टर्म्स एंड रेगुलेशन बनते हैं, सो दैट्स व्हाई इस पे मुख्तलिफ कमिटीज होती है, और उस कमिटी की अंदर जो है भी लॉट ऑफ मीटिंग्स होते हैं, इंटर कमिटीज मीटिंग होती है, और इन सब का एक ही फोकस होता है कि टू डेवलप द पॉलिसीज, टू डेवलप द टर्म्स एंड कंडीशंस। इसमें फिर ये है कि किसी एक बंदे के पास अथॉरिटी होती है, जो पॉलिसी मेकर्स उनके पास अथॉरिटी होती है, तो बाकी जिनके पास नहीं है, so they have no window to talk about those modification in the policies. So again, ये जो है restricted to some specific authorities. Secondly, इसमें ये भी देखा जाता है कि what will be the requirement for the teachers, उनकी qualification क्या होगी, उनकी जो है ट्रेनिंग क्या क्या होगी। तो ये सारी चीजें जो है एक रूल्स रेगुलेशन एंड पॉलिसीज एंड टर्म्स एंड कंडीशन बनाए, मेन फोकस इसी को होता है। So that is actually known as the bureaucratic approach. The last, but we can say the second last is the public relation approach, जहाँ पे the man focuses on the public image of that institute, या उसको लोग क्या चाहते हैं, यानी लोग क्या इसके बारे में चाहते हैं, या जो सपोज एप्लीकेंट से वो क्या चाहते हैं, जो स्पॉन्सर्स है इस वो क्या चाहते हैं। तो ये जो है इसमें मेन थिंग जो कंटेंट्स और ये चीजों पर नहीं, बल्कि दूसरे लोगों को के व्यू पॉइंट जो है वो देखा जाता है, और उसकी बेस पर जो है फिर ये कुरिकुलम डिजाइन किया जाता है। सो व्हाट अदर्स थिंक अबाउट और कुरिकुलम, और फिर उसकी व्यू पॉइंट सुनने के बाद जो है मॉडिफिकेशन इसमें और चेंजेस इसमें लाए जाते हैं। तो इसमें से जो है मुख्तलिफ गवर्नमेंट बॉडीज भी हो सकते हैं, स्टेक होल्डर्स, स्पॉन्सर्स भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल पब्लिक भी, एप्लीकेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये जो मुख्तलिफ लोगों की बाहर की हर एक की बात सुनी जाती है, और हर एक की बात जो है फिर रिकॉर्ड की जाती है, और इसी के मुताबिक फिर चेंजेस जो है लाए जाते हैं। सो दैट इज एक्चुअली नोन एज द पब्लिक रिलेशन अप्रोच, और इसका एक मेन फोकस ये होता है कि इस इंस्टीट्यूट का जो पब्लिक इमेज है वो बरकरार रहे, वो ज्यादा रहे, विकास उन लोगों के ही मुताबिक जो है ये सब बनाया जाता है कि किस तरह जो है ये कुरिकुलम होगा। सो अगेन, दिस इज नॉट इन दैट रिकमेंडेड list of the approaches used for the curriculum development. The last one, this is the magician approach. जस्ट लाइक एक मैजिशियन जो है वो रेड के एक टोपी से जो है एक रैबिट को निकाल लेते हैं, तो ये पता नहीं चलता कि ये इस
टोपी में ये रैबिट कहाँ से आ गया और किस तरह उसने ये इसको, या पहले नहीं तो, और अब इसने कहाँ से इसको एंटर इनटू दैट हेड। इसी तरह ये भी होता है कि कुरिकुलम बनाया जाता है, उसमें ये जो है नहीं देखा जाता कि किस तरह ये कुरिकुलम या कंटेंट जो है पढ़ाया जाएगा, कौन पढ़ाएगा इसको, और क्या कंटेंट इसकी क्या है। एक अनरियलिस्टिक अप्रोच होता है, और इसमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव भी नहीं होती, और कुछ ऐसी होते हैं कि जो प्रैक्टिकली जो है वो पॉसिबल नहीं होती। सो अगेन दिस इज दैट अप्रोच व्हिच इज टोटली नॉट रिकमेंडेड, एंड the other approaches, they may have disadvantages, but as well as they have the advantages. This approach is totally have no such obvious advantage, and most of them they have disadvantage and disadvantage. So that's why, if the previous approaches they may be used, but this one is totally unrecommended to be used during the curriculum development. So these were some of the approaches which are used in the curriculum development, and we have discussed the pros and cons. So it's very easy to decide which one is the best approach used for the curriculum development. So that is the engineering approach. There may be the mechanic approach, the cookbook approach, the railway approach, the reality approach, the magician approach, the public relations approach, the bureaucrat approach, are the that detective approach. So these different approaches are used for the curriculum development. Which one is the best? It again depend on the situation, and every approach have its advantages as well as the disadvantages. Now, the briefly discussing that who will be involved in the decision making for this curriculum development. ये जो अप्रोच यूज होगा तो कौन लोग होंगे जो इस अप्रोच के जरिए मॉडिफिकेशन जो है इस कुरिकुलम में लाएंगी, चेंजेस लाएंगे इस कुरिकुलम में, ये न्यू कुरिकुलम कौन बनाएंगे। सो इसकी भी कुछ अप्रोचेस है, एंड वन ऑफ देम इज द यूनाइटेड नेशंस अप्रोच, जिसमें ये होता है कि जो डेवलपमेंट जो डेवलपर्स ये टीम होती है, डेवलपिंग टीम होते हैं, उसमें हर एक डिपार्टमेंट से एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। इसमें से कुछ जो है उससे भी होते हैं जो डायरेक्टली एकेडमिक में इन्वॉल्व नहीं होते, ये दे में भी द स्पॉन्सर्स होते हैं। तो इसमें हर एक एस्पेक्ट से जो है एक एक रिप्रेजेंटेटिव, और यूजुअली डिपार्टमेंट का जो हेड होता है दैट माइट बी सिट इन दैट टीम, दैट मे बी द मेंबर ऑफ दैट टीम। सो लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि अगर हम तमाम जो है डिपार्टमेंट जो है इसमें इंक्लूड करते हैं, तो फिर भी जो है कुछ ऐसे डिपार्टमेंट आते हैं जो निगलेक्ट की, जैसे छोटे डिपार्टमेंट, मिसाल के तौर पर मेडिसिन में अगर हम एज कंपेयर टू द मेडिसिन, सर्जरी, एनाटॉमी एंड those basic medical sciences, the small department like ophthalmology and dermatology, they might be neglected in their representation. This is, I am just supposing these two. तो फिर यही एक इशू इसमें आ जाती है कि हाउ मेनी मेंबर्स देयर विल बी। अगर इसमें आप ज्यादा लोग रिप्रेजेंटेटिव बिठाएंगे तो ऑब्वियसली इसको मैनेज करना मुश्किल होगा। हर एक की अपनी व्यू पॉइंट होगी, हर एक अपनी व्यू पॉइंट के मुताबिक उसमें पोएंगे। तो इसलिए जितनी ज्यादा होंगी तो प्रॉब्लम ज्यादा होगी। तो बेहतर ये होगा कि the smaller the team would be, the better it will be to effective it will be managed. So इसीलिए ये जो representative है, that might be from the every department, but it should be depending on the situation, that what the curriculum has been designing, the curriculum is of which discipline, the curriculum is of which subject, उसकी जो है representation जो है फिर हो सकती है। The next is the people Congress approach. ये वो approach है कि जिसमें से each and everyone, smaller department, larger department वाली बात नहीं है, बस everyone who is concerned with this curriculum will be involved in that team, which will be going to bring those modification and changes in that curriculum. चूंकि इसमें से हर एक include होता है, all concern include होता है, that's why there is a wide input, which is a very good point. But again, जितनी ज्यादा ब्रॉड एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रॉडली जो है इसमें इनपुट है, उतनी ही उसको मैनेज करना और एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जो है पहुंचना मुश्किल। समटाइम्स
इतनी ज्यादा डिस्कशन इसमें कि भाई जो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा है वो अमूमन जो है अचीव नहीं होता, बिकॉज ऑफ द टू मच डिस्कशन एंड टू मच इनपुट्स. So that's why the orientation of such is too difficult than if we have such large number of people in the curriculum designing. So, and if everyone which is concerned with the curriculum design is involved, obviously it will be a time consuming, and टाइमिंग consuming के साथ साथ जो है इतने सारे इनपुट्स आएंगे कि माइट भी जो है हम साइड ट्रैक भी जा सकते हैं, कि जो मेन हमारा डायरेक्शन है उस डायरेक्शन से हम डिवेट भी जा सकते हैं. तो इसीलिए ये उसमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज है इस अगर पीपल कांग्रेस अप्रोच में, कि एट द एंड इतनी ज्यादा वाइडेस्ट इनपुट पर कंसेंसस जो है लाना ये भी मुश्किल हो जाता है. सो एक तरफ अगर हम देखें एडवांटेजेस जो है इट मे हैव द वाइडेस्ट इनपुट, बट ऑन द अदर हैंड इट हैज a lot of disadvantages as well as compared to the previous United Nations approach. This is the customer's approach. We can also call it as the consumer approach. In customer approach, usually each every aspects of that who is concerned mean previously जहाँ पे हमने यूरिकॉन का कहा तो that are academics और उस लेवल पर है जो पढ़ाएंगे या इसकी एक्सपर्ट लेवल पर हैं. यहाँ पे जो है जिनके लिए ये सब कुछ हो रहा है उनको हम इंक्लूड करेंगे. They might be the students, they might be the patient, they might be the public, they may be the employees, टेक्नीशियंस, नर्सेस, डॉक्टर्स, एवरीवन जो इसके जो इसमें इन्वॉल्व होंगे या जिसके लिए ये बनाया जा रहा है, तो तमाम के तमाम जो हैं इसमें, और इसमें फिर मुख्तलिफ लोगों की जो राय ली जाती हैं. स्टूडेंट अप्रोच जो है या इन्वॉल्वमेंट जो है ये बहुत इंकरेजिंग है, बिकॉज स्टूडेंट्स जो है वो जानते हैं कि व्हाट आर द उनके रिक्वायरमेंट क्या है, बट अगेन देयर इज a disadvantage of this students environment, कि क्या स्टूडेंट्स की उस लेवल है कि दे डिसाइड व्हाट दे नीड, व्हाट इज उनकी चाहिए क्या. सो दैट्स व्हाई अभी ब्रॉड जो है चाहिए आप स्टूडेंट कि उनकी जो थिंकिंग है, उनकी जो knowledge है, that should be much broad. So again, this is advantage as well, but on the other hand, disadvantage as well if the students as well as the public and patient they are involved in the decision making about the changes, about the updating of that curriculum. Consultant approach, in this approach, an consultant from outside the department is hired. और इसकी कुछ जो एडवांटेजेस वो ये हैं कि चूंकि ये बंदा जो हायर किया जाता है, obviously he would have a wide experience of the curriculum designing, a wide experience in the academics. उस फील्ड रिलेटेड बंदा होगा और हाई एक्सपीरियंस बंदा होगा, तो इसलिए उसका जो एक्सपर्ट ओपिनियन है ये बहुत मैटर करेगा. ये जो कंसल्टेंट अप्रोच है इसमें द आउटसाइडर जो हायर किया जाता है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, यानी वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगा वो, लेकिन वो सजेशन देगा. और फिर जो वहाँ की लोकल जो मेंबर्स है दे विल देन एक्ट अपॉन एंड उसको कंसिडर करेंगे उन सजेशन को जो ये एक्सपर्ट ओपिनियन ये दे देता है. So another advantage is that that consultant may have an objective and unbiased related to that curriculum, as he will be apart from the local politics of that institute, of that organization. So that might have a very unbiased approach for that the new curriculum. On the other hand, it has some disadvantages as well, as if the institute is hiring an outsider person, so it may be very costly. And again, there may be two main concerns with this approach. This is the applicability and as well as the sustainability. These two that are very difficult to maintain all those changes, all those suggestions which has been made by the external consultant, as well as if the suggestions are being presented by the external consultant, they might not be applicable on this organization, this situation, because the person who is the external consultant, them he she may not be
oriented from what is being there about the each and resources and infrastructure and each and everything of that. So might be he have that experience in his own garage in his own setup, but here it may be not applicable. So these two, the applicability and then the sustainability, maintainability, there may be the problem in this approach. The next approach is the chair approach, which is also known as that we can say that the dictator approach. Why it is known as a dictator chair approach? Because a single person is involved in the decision making. कुछ एडवांटेजेस भी हैं इस अप्रोच की। उसमें एक तो ये है कि एक सिंगल पर्सन के पास जो है पावर होता है, उसके पास जो है एवरीथिंग और डिसीजन मेकिंग पावर होती है। तो उसका जो ऑब्जेक्टिव होगा ये बहुत क्लियर होगा एंड स्पेसिफिक होगा, क्लियर गोल होगा कि ये काम करना है और ये इस तरह करेंगे। तो फिर उसका ये है कि स्ट्रांग लीडरशिप होगा। तो व्हेन इट देयर इज ये और अप्रोच तब यूज होता है ऑब्वियसली व्हेन देयर इज अ स्ट्रांग लीडरशिप। तो फिर वो क्या करता है, इन सारे प्रोसेस को बहुत एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में जो है इस चेंजेस को लेके आएगा और इट विल बी नॉट अ टाइम कंज्यूमिंग एज वेल। और करिकुलम जो है दैट विल बी साइड ट्रैकिंग उसमें नहीं होगी, उसमें कंसेंसस वाली बात भी नहीं होगी। सिंगल पर्सन डिसीजन एंड देन दैट डिसीजन इज बीन मेड very easily and very quickly. But on the other hand, it also depends on the quality of that leadership which is being involved in that curriculum development, as well as what is the relationship of this leader, of that dictator, that person who is bringing all those changes with their employees. Usually, the person who is involved, that chairperson, there may be the dean of that department, there may be the director academics, maybe. So, what are the relationship of this superior authority with the that inferior authorities are those academics are those staff? If the if relationship between this dean or that director academics or other superior authority and the other uh, faculty staff, they are good, so it will be very easy for them to implement the changes. But if the relationship of this leader, they are not good with their subordinates, so obviously there will be a lot of obstacles, a lot of problems and challenges in implementation of those the changes which is being brought in the curriculum by that single person. Again, they depend also depend on the flexibility of that chairperson, that person who is involved in the bringing those decision powers जिसके पास होती है. So though it is a very good approach, but it might have these issues as well. So we discussed that United Nations approach, public relation approach, that chair approach, consultative approach. Who should take, who should make the decision for the curriculum development? We have discussed that which one is the best approach. हर एक की advantages, हर एक के disadvantages है. So that was all about the curriculum डेवलपमेंट, कौन सा अप्रोच जो है बेस्ट है और कौन जो अप्रोच है उस अप्रोच में जो लोग होंगे वो कौन होंगे, तो ये हमने डिस्कस किया विद shortly and briefly discussing the advantages and disadvantages as well. So that was all about. Thank you so much to all of you.